Dopamine. It is a alpha 1, alpha 2, beta 1 and D1 agonist. Alpha 1, alpha 2, beta 1, D1 agonist with NA release, noradrenaline release. Alpha 1, alpha 2, beta 1, D1 agonist with NA release. Dopamine is a catecholamine and the immediate metabolic precursor of noradrenaline. It is a catecholamine and the immediate metabolic precursor of norepinephrine. It acts on dopaminergic D1 receptor. It acts on dopaminergic D1 receptor as well as beta 1 and alpha 1 adrenergic receptors. It acts on dopaminergic D1 receptors as well as beta 1 and alpha 1 adrenergic receptors. Dopamine, like adrenaline and noradrenaline, is not effective orally. So, dopamine is not effective orally. It is rapidly inactivated by COMT and MAO, and so it is administered by IV infusion. Okay, so dopamine is a alpha 1, alpha 2, beta 1, D1 agonist. It is a catecholamine, the immediate metabolic precursor of noradrenaline. It acts on dopaminergic D1 as well as beta 1 and alpha 1 adrenergic receptors. It is not effective orally. It is administered by IV infusion. It is rapidly inactivated by COMT and MAO. It is rapidly inactivated by COMT and MAO. It is not effective orally. Route of administration is IV infusion. Route of administration IV infusion. Pharmacological action at low doses, that is less than 2 microgram per kg per minute. It selectively dilates the renal, mesenteric and coronary blood vessels by acting on the D1 receptors, resulting in increase in GFR and urine output. At low doses, it selectively dilates the renal, mesenteric and coronary blood vessels by acting on the D1 receptors, resulting in increase in GFR and urine output. So dopamine के कारण GFR increase करता है, urine output increase करता है. लो डोजेस पे ये D1 receptors पे act करेगा, जिसके कारण renal artery, mesenteric artery और coronary blood vessels will selectively dilate. Low doses पे it selectively dilates renal, mesenteric, coronary blood vessels by acting on the D1 receptor, resulting in an increase in GFR and urine output. Moderate doses पे dopamine stimulates beta 1 receptors of heart, increases myocardial contractility and cardiac output. तो बीटा 1 के स्टिमुलेशन के कारण मायोकार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है. बीटा 1 के स्टिमुलेशन के कारण मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, बट टैकीकार्डिया इज लेस प्रोमिनेंट. It also stimulates dopaminergic receptors, resulting in the increase in GFR. So moderate doses पे ये B1 को stimulate करेगा, जो कि हार्ट पे प्रेजेंट होता है, जिसके कारण मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है. मायोकार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट आउटपुट, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है. टैकीकार्डिया इज लेस प्रोमिनेंट. ठीक है, और ये मॉडरेट डोजेस पे डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण जीएफआर इंक्रीज होता है. मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डियक आउटपुट और जीएफआर इंक्रीज हो रहा है. हाई डोजेस पे इट स्टिमुलेट्स vascular alpha 1 adrenergic receptors and causes generalized vasoconstriction. इसके कारण आफ्टर लोड इंक्रीज होगा. generalized vasoconstriction के कारण आफ्टर लोड इंक्रीज होगा, and this reduces the blood flow to renal, mesenteric and other vital organs. So the beneficial effect seen with low to moderate dose as is lost at higher doses. ठीक है, तो डोपामिन का जो लो और मॉडरेट डोज पे थेराप्यूटिक इफेक्ट था कि ये रीनल आर्टरी, मेसेंट्रिक आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करता है, जिसके कारण जीएफआर इंक्रीज होता है. ये सारा जो इफेक्ट है दैट इज़ लॉस्ट एट हायर डोजेस. द बेनिफिशियल इफेक्ट्स आर लॉस्ट एट
हायर डोजेस, क्योंकि हाई डोज पे ये अल्फ़ा 1 को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण आफ्टर लोड इंक्रीज़ होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन के कारण आफ्टर लोड इंक्रीज़ होगा, और जो ब्लड फ्लो है दैट विल डिक्रीज टू वाइटल ऑर्गन्स. During dopamine infusion, the dose, BP, heart rate, ECG, and urine output should be carefully monitored. Dose, BP, heart rate, ECG, urine output को monitor करना. Adverse effects seen are mainly due to sympathetic stimulations. ठीक है, ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 को स्टिमुलेट कर रहा है, तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के कारण जो भी एडवर्स इफेक्ट होंगे वो होंगे. दे आर nausea, vomiting, headache, hypertension, tachycardia, cardiac arrhythmias and angina. nausea, vomiting, hypertension होगा, tachycardia, cardiac arrhythmias और angina. hypertension, cardiac arrhythmias, angina और tachycardia. Therapeutic uses. Okay. Dopamine is used in cardiogenic and septic shock. Okay, डोपामिन को कार्डियोजेनिक और सेप्टिक शॉक में यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि ये बीपी को इंक्रीज़ करेगा एंड इट सेलेक्टिवली डायलेट्स रीनल, मिसेंट्रिक एंड कोरोनरी ब्लड वेसल्स एंड इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू वाइटल ऑर्गन्स. ठीक है, कार्डियोजेनिक और सेप्टिक शॉक में यूज़ करते हैं डोपामिन को. ठीक है, क्योंकि डोपामिन जो है वो बीपी को इंक्रीज़ करता है एंड इट सेलेक्टिवली डायलेट्स रीनल, मिसेंट्रिक एंड कोरोनरी ब्लड वेसल्स and improve the blood flow to vital organs. It is also used in severe heart failure with renal impairment. severe heart failure with renal impairment. डोपामिन के कारण कार्डियक और रीनल फंक्शन दोनों इम्प्रूव होता है. सो इट इज़ यूज्ड इन सीवियर हार्ट फेलियर विथ रीनल इम्पेयरमेंट. थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ डोपामिन, कार्डियोजेनिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक, severe heart failure with renal impairment. So this was about dopamine, which is a alpha 1, alpha 2, beta 1 and beta 1 agonist with noradrenaline release.